likely to move ahead. Some reports suggest he could be going to the United States, others that he could be going to Dubai. Of course, there are no confirmed reports as yet, and that it's a step that he's taken as a strategy in order to protect himself from being arrested. Saloni joining us once again. Saloni, once a tourist paradise, it's a devastated country now. You said the army has taken over. We are also hearing reports of clashes between the police and protesters. In the morning, protesters gathered at the Gallifey's Green. Now you're saying that they are moving towards the country's parliament. Many of them, we can see in those visuals that you're bringing us, lying exhausted on the streets of Colombo. Take us through what's happening now. Also, any information on the protesters who are inside the presidential palace? Have they left the palace? प्रेसिडेंशियल पैलेस अभी तक छोड़ा नहीं गया है और अभी जहां हम पहुंचे हैं यहाँ पर ही देखिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ था और यही वजह है कि भारी भीड़ प्राइम मिनिस्टर दफ्तर की तरफ बढ़ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ। वहीं हम भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। दरअसल यहाँ पर बल प्रयोग किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे लोगों को तितर बितर करने के लिए प्रधानमंत्री के दफ्तर पर। और ऐसे में सारे प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास से सीधे उठकर इधर आ गए हैं। देखिए संख्या बल भी देखिए, लोगों की ताकत यहाँ पर दिखाने की कोशिश, लोगों की ये बताने की कोशिश कि अब किसी तरह की मनमानी नहीं चलने वाली, बर्दाश्त नहीं की जाएगी मनमानी। और देखिए तस्वीरें, आप देखिए, आपको ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। मुझसे ज्यादा ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितने गुस्से में है, कितने गुस्से में। 1 बजे तक की डेडलाइन दी गई थी, आप जिक्र भी कर रही थी उस डेडलाइन का। 1 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, करीब 1.25 घंटे का वक्त है। और उससे पहले 13 तारीख की सुबह यानी आज सुबह मालदीव्स पहुंच चुके हैं राजपक्षे। कहा जा रहा है दुबई जाएंगे। ये देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। यहाँ काफी शोर है, आप नारेबाजी सुन सकते हैं। देखिए अंग्रेजी में एक पोस्टर है यहाँ पर, वो हम आपको दिखाएंगे पोस्टर। अंग्रेजी में पोस्टर लिखा है से नो टू एनी पॉलिटिक्स, से नो टू एनी पॉलिटिक्स, स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ श्रीलंकन, गोटा गो होम 2022। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है पोस्टर और यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं। आप देखिए नारेबाजी हो रही है। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। 1 बजे the time decided for resignation is 1 p.m. and if he doesn't resign, what you will do? People will continue to protest like this, and they need a political solution because the system, we need to change the system. System is corrupted. If anybody comes to power, this system is not allow them to do the justice for the country. So we need to change this system. If Wickremesinghe becomes president, will you guys accept that? If Wickremesinghe becomes president, will you guys accept that? I don't think. We are not. Yes, people are not going to accept. People are not going. Public. अगर राष्ट्रपति बनते तो लोग मानने को तैयार नहीं है। लगातार नारेबाजी हो रही है, हम आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं और यही हालात हर तरफ सड़कों पर नजर आ रहा है। अब है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने बात भी की जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनका कहना है कि से नो टू एनी पॉलिटिक्स विच स्टॉप्स यू टू बी अ श्रीलंकन, यानी जो भी राजनीति आपको एक असली श्रीलंकन बनने से रोकती है। देखिए लंका धधक रही है लोगों के गुस्से से, लोगों की नाराजगी से, क्योंकि यहाँ पर अब लोग समझ चुके हैं कि कम से कम राजपक्षे परिवार तो So live visuals from Colombo in Sri Lanka. Most of them, as you can see in those visuals, even as they spoke with our correspondent Saloni, who's there on the ground, it's an exhausting march to the Prime Minister's office. They've given the deadline. They say that this is a people's movement and they've given the deadline of 1 p.m. Of course, we'll have to wait and watch, even as the news broke early this morning.
of Gotabaya Rajapaksa, President Gotabaya Rajapaksa fleeing the country with his wife and 2 security officials in a military jet. The go-ahead given by the government. Lahiru joining us, our correspondent there, to review for us, and because it's through his eyes and through Saloni's eyes that we are getting a glimpse of the events as they are playing out. Lahiru, it's nearing the deadline of 1 p.m. How do you see the situation as it is now, as thousands move to the Prime Minister's office? Most of them we see are young students. Yes, we are getting to know that curfew has been imposed in the western province of Sri Lanka, and also we are also getting to know that the state of emergency has also been declared by the Prime Minister, and the Prime Minister has also, according to sources, the Prime Minister has also instructed security forces to arrest anyone destroying public property, any rioters in lorries and trucks to be arrested as soon as possible, because the instructions have been given to security forces to arrest anyone who is behaving unruly and who is trying to destroy public property. And we can see over 10,000 protesters are now marching towards the Prime Minister's office to make sure that Prime Minister also resigns with the President. But we cannot see any sign from the government that they are budging to the protesters. We can only see that the government is now going to impose emergency laws and also going to impose curfew and trying to take control of the situation in Colombo. Right, Lahiru, when you talk about emergency, well, what could it mean? Could it mean the rounding up of all these protesters being put? Well, Lahiru will be coming back to you and to you, Saloni, as well. But now it's time for a short break. We'll be continuing our exclusive coverage of Sri Lanka and the crisis that's unfolding there. Stay tuned after this short break. The biggest news stories from Bengal. The loudest voice of the people of Bengal. Bengal's best reporters live on Bengal's #1 Bangla news channel. A quick roundup of news in brief. Congress High Command is reportedly unhappy with Congress MP Manish Tiwari, who is part of the Consultative Committee for Defence in the Parliament after he refused to sign the opposition's memorandum seeking withdrawal of the centre's Agnipath recruitment scheme. There is an outrage within the Congress against Manish Tiwari, we are told, who has openly supported the Agnipath scheme contrary to Congress stand. Despite heavy rains in Kedarnath in Rudraprayag district of Uttarakhand, the journey to the sacred temple has resumed. Starting today, the rain has caused slight drop in the number of devotees as well travelling to Kedarnath. However, despite the rains and the roads that have been damaged as a result of these rains, pilgrims are enthusiastically seen continuing with their journey to the temple. And here's a look at some more news in brief. The National Investigating Agencies conducted searches at 9 locations in Rajasthan's Udaipur district in connection with the killing of a Hindu tailor, Kanhaiya Lal, last month. Now, the NIA has seized all digital devices and other incriminating materials, which will further help in the probe. Further investigations in the case are underway. Shocking footage shows the Coast Guard's flag and the Indian flag dumped in Kochi's Irupanam. The police have registered a case in the matter while further investigation is underway. Apart from the tricolour, Coast Guard helmets, uniforms and other accessories were also found in the dump. Karnataka's Home Minister has announced that he will reduce the jail term for prisoners if they reveal whether other inmates are using mobile phones or any other banned substances inside the prison. Now, he further added that a reward of 2,000 rupees will be given to police personnel who
And breaking news coming in now. Emergency declared in Sri Lanka. Lahiru, our correspondent on the ground in Colombo. Those are visuals that Republic is giving you live from the Lankan capital as the Sri Lankan crisis spirals almost out of control. Now in an attempt to maintain control, we believe emergency has been declared. Lahiru, when you say that, emergency has been declared and there would be orders passed, directions given to the army and to the police. Well, Saloni was telling us how the army is now trying to maintain control. The police earlier in the day had tried to disperse protesters with tear gas. We'd like to hear from you about what the next steps that could be adopted could be. According to the Constitution, the President can only declare emergency. So the Prime Minister has now, the Prime Minister is the person who is now in charge of the country. And we've got to know that he has imposed emergency laws as well as curfew in Colombo. Now the security forces, including the military, like before, the police could only arrest people, but now the military can also arrest people under the emergency laws, and they can also round up protesters, and they can also arrest all these people who are now rioting and who are also protesting against the Prime Minister and the President in Colombo. Now the military have full powers to crack down on the protesters. Legally, they have the full powers to crack down on the protesters. Right. When we look at the protesters right now, ever since the news broke this morning of Gotabaya Rajapaksas having fled the country, they have come out on the streets. What can you tell us about the protesters we are seeing right in front of us? Are they different from those who are camped inside the presidential palace? Are they new entrants, new protesters who are coming in from different parts of the country? Or are the protests being carried out at different places in Colombo? New protesters are also now joining the protest movement. We are hearing that more people are now going to the streets and headed towards the Prime Minister's office. And we've got to know that there are over 13 factions of protesters, different types of communists, different types of socialist unions, different types of independent groups, liberals, everyone. There are 13 different types of protesters now heading towards Colombo, and so far there is no leadership behind them. These are all independently organized protests. These are all independently organized protesters, and they are all united towards making sure that the President resigns and also the Prime Minister resigns. And Lahiru, stay with us. We'll be coming right back to you. We see a chopper flying overhead. Well, lots happening there in the Sri Lankan capital. But now it's time for a short break. Stay tuned. We'll be right back. Punjab's Advocate General AG Sidhu was attacked by unidentified people while he was travelling via train. Some unidentified people pelted stones at him near Panipat. The AG filed a complaint to the police for further investigation. Punjab Advocate General appeared in the Supreme Court in the Lawrence Bishnoi case yesterday. In another jolt to the Uddhav Thackeray camp, the Yuva Sena leader Vikas Gogawale has joined Eknath Shinde's camp. Vikas was seen at the Chief Minister's residence last night, formally extending support on the occasion of Guru Purnima. He also claimed that more than 50 office bearers of the Yuva Sena will join the Shinde camp this week. A group of nearly 8 terrorists tried to sneak in via the Poonch line of control in Jammu and Kashmir. An infiltration attempt was witnessed during the midnight along the line of control. Indian Army has neutralized 3 terrorists on the spot in heavy firing now. This comes just days ahead of the Amarnath Yatra. The AIADMK's interim General Secretary EPS and ousted party leader OPS moved the Madras High Court against the sealing of the party headquarters by the Tamil Nadu government on the 11th of July. The High Court is likely to hear the matter today. In a heart-wrenching incident in Pune's Kher Taluka, 3 children have lost their lives after falling into a huge pothole. As per the complaint that has been given by the father of these children, his children lost their lives after falling into a huge pothole in Ambethan area of Kher Taluka of Pune. The Mumbai Police Commissioner Vivek Pansalkar has
Well, the Mumbai Police Commissioner Vivek Valsarkar has revoked a circular which mandated that no FIR needs to be filed for molestation or under the POSCO Act should be registered without the Zonal Deputy Commissioner of Police's permission. The biggest news stories from Bengal. The loudest voice of the people of Bengal. Bengal's best reporters live on Bengal's #1 Bangla news channel. The Narcotics Control Bureau pins down Riya Chakrabarti's role, says Riya was in touch with drug peddlers and supplied narcotics. It's a three-layered mega Riya role in the drugs case. She procured, she was in touch, and she funded and supplied the drugs. The Lankan campaign to save Riya Chakrabarti has now finally officially flopped. Shocking attack by the Vadra Congress on Draupadi Murmu, says she represents an evil philosophy. The BJP retorts, says attacked for her tribal background. Terror attack in Srinagar's Lal Bazar is caught on tape. Terrorists captured in the video. ISIS offshoot has taken responsibility. Amid turmoil, Sri Lankan president flees to the Maldives for a layover, will reach the final destination today. From landslides in Maharashtra's Vasai to Uttarakhand's Chamoli, monsoon fury across the nation. Good afternoon and thank you very much for staying with us on Republic TV. This is live and breaking. I'm Nupur Talwar Suri. We cut right across to Sri Lanka, where protesters are thronging central locations in Colombo. We are also learning that a state of emergency has now been imposed in Sri Lanka. I'm going to go across to our correspondent on the ground, Lahiru, who's tracking all the developments. Lahiru, tell us what's happening. We understand a state of emergency has been declared in Sri Lanka, but anger still continuing to pour out on the streets over there, even though news came in that the president had fled Sri Lanka this morning. Yes, we are getting news that the president has fled the country, but the protesters are not happy because the president has not yet officially resigned from his post. We are also getting rumors and reports that the prime minister has sworn in as the president, but this has not yet been confirmed by the Sri Lankan government. And the prime minister, with his powers, he has enforced the emergency laws and also enforced curfew in and around Colombo and the western province of Sri Lanka, and he has ordered to arrest all people who are engaged in destruction of public property, looting and rioting. All right, now Lahiru, where exactly are you reporting from, and the scene that you're and what are you witnessing around you? We can of course see thousands of protesters thronging that location, but also give us a sense of what we're expecting in the next few hours or so. There are more people headed towards the streets, and I am currently near the National Hospital of Sri Lanka. So we are also expecting more people, more injured people to arrive to the National Hospital of Sri Lanka when the violence explodes in Colombo. There are more people going towards the Prime Minister's office as of now, and we can also hear over 3 or 4 government helicopters flying above from where I am. We do not know what the security situation is, but we also know that the security forces have been ordered to take control of the situation before it goes to complete anarchy. Now, do people around you know that there is a state of emergency in place? Because it does not appear right now that people know of that, because they're still continuing to throng the streets of Colombo in thousands. No, I don't have any issue.
I was asking you, Lahiru, that do people around you know that there is a state of emergency? Has it been proclaimed? Are people aware that they're breaking the laws because a state of emergency is now in place in Colombo and Sri Lanka widely? So this has been broken in almost every Sri Lankan news outlet, but there has not been an official announcement so far made by the government. But it has been broken by every news outlet in Sri Lanka that the security situation has been beefed up and emergency has been declared by the government. But there's no official response from the government. There's no official response from the government according to my sources as well. And people around are now getting to know that emergency has been declared, but people are not regarding it. People are not giving anything about it. They do not care about it. They are coming towards the streets regardless if emergency is declared. Right. Also, we were hearing earlier that Ranil Wickremesinghe has been, perhaps will be the next president. Now, do what we see on the streets is essentially voice to people's anger? Because there has been considerable angst and anger against Ranil Wickremesinghe. Also, he'd in fact earlier said that he would step down as the country's prime minister. But now we are hearing that he could be the next president, at least for, the meanwhile. Yes, so the issue with that is that there is no other, the protest movement has no leadership. According to the Prime Minister, if the Prime Minister resigns, there will be a power vacuum in Sri Lanka, which will lead to anarchy. There are over 13 different factions of protesters claiming to have their own leader. So Sri Lanka will be leaderless if both the Prime Minister and the President resign at once. And that is a very real fear, isn't it, Lahiru? Because a vacuum of leadership will not allow Sri Lanka essentially to be able to negotiate either with countries or with the IMF for a bailout package, which is the need of the hour, isn't it? Yes. The governor of the Central Bank of Sri Lanka yesterday said that the IMF negotiations are now underway, and if the Sri Lankan government suddenly collapses without a leader, without a president, without a prime minister, without a cabinet, it will all fall down and Sri Lanka will go towards more economic collapse. Right now, as you're pointing out, these appear to be organic protests that are taking place at various sites across Colombo. Now, what is the final demand of these protesters? Because, one would see this as a significant victory that the president has fled the country. But what is it that will be their final aim? Okay, news just coming in. We are learning now that Ranil Wickremesinghe, the prime minister who had offered to resign, has taken oath as the president. So we are now able to confirm that Ranil Wickremesinghe, who was the prime minister, has now taken oath as the president of Sri Lanka. We're also learning that martial law or emergency has been proclaimed across Sri Lanka. News just coming in on both aspects. I'm going to go back to Lahiru. Lahiru, we are now getting a confirmation that Ranil Wickremesinghe has become the new president. Can you take us through what you're learning? We are getting reports that we have not yet got official reports from the government that the Prime Minister has been appointed as the acting president, but reports are now circulating that he has already taken oath as the acting president, and people are calling it as an illegal transition of power. But now Western diplomats and Western envoys in Sri Lanka are now calling for a peaceful transition of power, and for the protesters, they have now achieved the ultimate goal of driving away the Rajapaksa family and also Gotabaya Rajapaksa from his presidential post. This is a significant victory for the protesters, but they are now also claiming the Prime Minister, now the acting president of Sri Lanka, to resign from his post as well. But there's a dilemma. If he resigns, there will be no leader in this country. Sri Lanka will be leaderless, and then it will drive towards anarchy where the protesters could not gather around one leader. Right. So what we are seeing right now, of course, are continuous organic protests that are taking place. Now, any word that you are getting from the government in place right now as to what emergency measures are likely to be put in soon? Because we know for a fact now that emergency has been declared in Sri Lanka. Yes, there's not much revealed by the government or the authorities. We are staying in touch. We will break it as soon as we get it. But so far the government is silent. Other than the emergency being declared, there's no other official statement released by the government.
All right, Lahiru, what I also wanted to understand from you is that under Sri Lanka's constitution, ideally it would be the Prime Minister who would take over as the President if a situation like this one that has arisen now so comes to be. But obviously there is a lot of anger against Wickremesinghe as well. So in that scenario, is there any other way out, or what we are learning that he's now become the President, is that the only way out? So far, until the 20th of July, when the Parliament will convene to elect the next President of Sri Lanka to serve Gotabaya Rajapaksa's term of another 2 years, until then, Prime Minister Ranil Wickremesinghe is the person who is constitutionally, at least, to take over as the President of Sri Lanka for the time being until 20th of July. All right, so what you're saying is that 20th of July is still when he needs to be in the seat of the president. But before that, of course, emergency has been declared. So it's up in the air what happens next. But protests still continuing. Now, you've been reporting on this for months now, Lahiru. What are the demands of these protesters? Is there any way that they're going to head back? Because at the end of the day, the end goal will be to get Sri Lanka out of this economic crisis. And that won't happen unless there is a government in place. So the protesters, there are different factions of protesters with different types of demands, but their common demand was to Gotabaya Rajapaksa to resign from his post. That is why they demanded Gota go home. Now करने के लिए देखिए ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे। दरअसल जो प्रदर्शनकारी थे, जब राष्ट्रपति फरार हुए, उसने नाराजगी जाहिर कर प्रदर्शनकारी जो प्रधानमंत्री का दफ्तर उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, किस तरह से आप ये प्रदर्शनकारी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार मिलिट्री का चॉपर ऊपर घूम रहा है और लोगों को यहाँ से हटाने के लिए ये किया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भगदड़ मस्ती यहाँ नजर आ रही है, भगदड़ मस्ती यहाँ नजर आ रही है। लोग रुक नहीं रहे। देखिए जिस तरह से घायलों को ले जाया जा रहा है, वो भी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को ले जाया जा रहा है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं जो हालात है अभी श्रीलंका की सड़कों पर। देखिए ये हालात यहाँ बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अबे लगातार अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े जा रहे हैं और लगातार नुकसान लोगों को हो रहा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने से लोगों की स्थिति खराब हो रही है। हम भी उस वक्त वहां मौजूद थे जब इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अभय तक ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, लगातार अभय के जरिए तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। देखिए घायलों को जाया जा रहा है, तुरंत मेडिकल एड जा रही है, तुरंत मेडिकल एड दी जा रही है श्रीलंका की सड़कों पर। प्रधानमंत्री आदेश देखिए क्या हालात, ये आपको हम दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की। अबे इस वक्त कहाँ है? मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ भारी भीड़ है यहाँ पर। की कोशिश कर रही हूं मैं, लेकिन देखिए तुरंत ही एक व्यक्ति को लेटाया गया आपात स्थिति में, क्योंकि जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोग मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं, आंसू रहे लोगों के। हमारी भी स्थिति वैसी है, क्योंकि आंसू गैस के गोले जब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लोग लगातार अपना मुंह पानी से धुल रहे हैं। हमने भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर रह रहा है, जिसकी वजह से लोग घायल हो रहे हैं। अभय तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। अभय हर तस्वीर पब्लिक पर आप दिखाने की कोशिश करें। देखिए भीड़ एक बार फिर भाग रही है, लगातार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल है। All right.
All right, so what we are seeing on your screens are right now live visuals that are coming to you from our reporters who are based in Colombo. Saloni, of course, was taking us through the situation. Now, what we understand is that force is being used to repel these protesters. We are hearing that tear gas shells have been lobbed at various locations. Now, some of the locations where these protests are carrying out include the presidential palace as well as the Prime Minister's residence, as well as several other official buildings in Colombo. Do remember that there is a state of emergency that has been imposed in Sri Lanka. I'm going to try and go across, dip into the audio that we are getting over there from Saloni. I think she's speaking right now. जो बैरिकेडिंग है उसे हटाया जा रहा है, लोग बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोग बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह से रोका जा रहा था लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, बैरिकेडिंग हटा रहे हैं और पीछे तक ले जा रहे हैं। लोगों ने दरअसल ये तय कर लिया है कि ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर इस तरफ प्रधानमंत्री का दफ्तर है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। देखिए एम्बुलेंस जा रही है अब, क्योंकि कई लोग घायल हुए। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई दी। और आगे बढ़ेंगे, आपको आगे ले जा रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। देखिए एम्बुलेंस यहां आ चुकी है, क्योंकि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल यहां लगातार हो रहा था। नारेबाजी हो हंगामा सड़कों पर नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अब तय कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने जैसे ही ये जानकारी मिली कि मालदीव जा चुके हैं, वैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया। देखिए लोग अब कानून अपने हाथ में ले चुके हैं। पहले लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। देखिए अब है, ये तस्वीरें दिखाइए। बैरिकेड्स आम लोग लेकर जा रहे हैं, बैरिकेड्स आगे बढ़ रहे हैं और नारेबाजी एक बार फिर नारेबाजी बढ़ रही है। हम आपको अंदर तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि विक्रमसिंघे ने आदेश दे दिया है। वेस्टर्न प्रोविंस है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझे, ये वेस्टर्न प्रोविंस है और यहाँ कर्फ्यू। और देखिए एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है, क्योंकि लोग घायल हो गए। उन्हें ले जाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स हैं जो लेकर जा रहे हैं। देखिए ये घायल को यहाँ अंदर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लगातार भगदड़ की स्थिति है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंखें जल रही है लोगों की। हमारे लिए भी ये समस्या है। हम लोग लगातार चेहरा पानी से धो रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारी भी वही कर रहे हैं। देखिए Well, our reporter over there is bringing us the latest in terms of pictures as well as emotions which are running high on the streets of Colombo. Thousands and thousands of people are thronging these protests. They do know that an emergency is in place, yet they are out on the streets in full strength. Now, one of the demands, of course, has been that this current government go. What we are now learning is that Wickremesinghe has been sworn in as the president. He's the interim president, as Gotabaya Rajapaksa has fled out of Sri Lanka. He's believed to be in Mali right now. But these protesters who have been on the streets across Sri Lanka, not just पानी की बोतल फेंकी जा रही है, जिससे कि लोग अपना चेहरा धो सके, मुंह धो सके। लगातार मिलिट्री का चॉपर ऊपर घूम रहा है, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे पानी की बोतल फेंकी जा रही है लोगों के बीच। और अब गो घाटा गो के नारे के साथ गो रानीला गो के भी नारे लग रहे हैं। यानी विक्रमसिंघे ने जो इमरजेंसी इंपोज की है, आपातकाल इंपोज कर दिया है श्रीलंका पर, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूरी सड़कें खचाखच भरी, आप देखिए पूरी सड़कें खचाखच भरी है। और ये वेस्टर्न प्रोविंस है जहां पर कर्फ्यू इंपोज किया गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको लाइव एक्शन की दिखा रहे हैं। कोलंबो श्रीलंका से रिपब्लिक हर एक तस्वीर आपके सामने रख रहा है। श्रीलंका की जो आपात स्थिति बनी हुई है, वहां पर किस तरह से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए लगातार एम्बुलेंस से लोगों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे हैं, इसलिए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से यहाँ से ले जाया जा रहा है।
जो ये आज तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वर्षों का गुस्सा है, दशकों का गुस्सा है राजपक्षे परिवार के खिलाफ, जो लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर लोगों ने उद्घोष कर दिया है कि अब किसी तरह की मनमर्जी, भ्रष्टाचार, मनमानी, पैसों की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, पूरी तरफ सड़कों पर अगर हम आपको दिखाएं तो दूर दूर तक लोगों का हुजूम आप देख पाएंगे। और साफ तौर पर श्रीलंका की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो फूड सप्लाईज है वो ठप है, पावर सप्लाईज है वो ठप है, दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है देश और लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय किया है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें जवाब देना होगा, चाहे वो रानिला विक्रमसिंघे हो, चाहे वो गोटबाया राजपक्षे हो, चाहे वो महिंद्रा राजपक्षे हो, राजपक्षे परिवार हो, उनको जवाब देना होगा। और लोग झंडा लेकर पहुंचे हुए, झंडा भी आप देख रहे हैं श्रीलंका का। लगातार ये पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई है और ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये वर्षों का गुस्सा है, सालों का गुस्सा है, जो आज फूट पड़ा है लोगों पर। और साफ तौर पर देखिए, लोग अब खुद हटा रहे हैं बैरिकेडिंग्स। अब है तस्वीरों दिखाइए, बैरिकेडिंग्स लोग हटा रहे हैं। लोग यहाँ पर दरअसल जिस तरह से इन्हें रोका जा रहा था उसकी खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और पूरा रास्ता लोग खुद खाली कर रहे हैं। देखिए, लोगों ने अब हाथ में ले लिया है सब कुछ, चाहे वो यहाँ का कानून हो, चाहे वो यहाँ की व्यवस्था हो। लोगों ने साफ कर दिया है कि अब न्याय वो खुद करेंगे, क्योंकि जो राजनेता थे, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जो जिम्मेदार थे, वो पीछे के रास्ते से फरार हो गए। वो अगर बात करें गोटबाया राजपक्षे की, तो मालदीव में है और दुबई जाने वाले, ये कहा जा रहा है। जिम्मेदार फरार हो चुके हैं, लेकिन जनता सड़क पर उतरकर अब जवाब मांग रही है। लगातार ये तस्वीरें आपको श्रीलंका से दिखा रहे। देखिए, आगे अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर ही आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है और वेस्टर्न प्रोविंस में पूरी तरह से कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। लोगों ने अब खुद तय कर लिया कि पूरा रास्ता खाली करेंगे। देखिए, बैंड लगाए हुए हैं गो गोटा गो के और लगातार यहाँ लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। 1 बजे की जो टाइमलाइन थी, 1 बजे का जो समय था, वो खत्म होने वाला है। 1 बजे की टाइमलाइन दी गई थी। देखिए, बैरिकेड्स कैसे हटाए जा रहे हैं। साथ में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं वो बता रहे हैं श्रीलंका के लोग दरअसल आजिज आ गए श्रीलंका के लोग। एक देश जिसके राष्ट्रपति ने सिर्फ अपने लिए पैसे बनाए, चाइना से नजदीकियां की तो अपनी जेबें भरी, सिर्फ अपनी जेबें भरी, देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो लोग अब तय कर चुके हैं कि वो अब इसके जो सिंहासन पर बैठे लोग हैं उन्हें हटाएंगे, उन्हें यहाँ से हटाकर एक नई सरकार। लेकिन देखिए, जो भी अब राष्ट्रपति बनेगा उसके सर पर ये कांटों भरा ताज है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। गोटबाया राजपक्षे ने जो टैक्स में छूट दी, उन्हें लगा जनता खुश होगी, फौरी तौर पर जनता खुश भी हुई, लेकिन उसके बाद कैसे भविष्य तय होगा ये नहीं समझ पाए राजपक्षे। गोटबाया ये नहीं समझ पाए कि आगे का भविष्य कहाँ जा रहा है। फॉरेन रिजर्व शून्य थे। भारत की तरह ये देश भी देखिए तेल का आयात करता है, और जब आयात किया जाता है एक मोटा अमाउंट फॉरेन रिजर्व का लगता है उसके लिए, और जब तेल नहीं होता तो देश में हर तरह की स्थिति खराब होती है। तेल ना होने पर पैसे नहीं होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड सप्लाईज महंगी होती, पूरी चेन फ्यूल पर निर्भर करती है, और जब फ्यूल ही ना हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और वही हुआ है यहाँ श्रीलंका में। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सड़कों पर लोगों के गुस्से की तस्वीर है, बयां कर रही है उनका गुस्सा जो दशकों से राजपक्षे परिवार ने राज किया और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा, विकास तो नहीं लगा। सुनामी के दौरान कहा गया जो फंड मिला उससे भी राजपक्षे परिवार ने पैसे बनाए। कोविड के दौरान जो फंड जनरेट किया गया उसमें भी राजपक्षे परिवार ने पैसे बनाए। टूरिज्म पर 70% ये देश टूरिज्म पर निर्भर करता है। टूरिज्म 2 साल कोविड के दौरान पूरी तरह से खत्म रहा और उस दौरान जो एड चाहिए था, जो श्रीलंका को एड चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसे साफ
साफ तौर पर देखिए श्रीलंकन्स अब तय कर चुके हैं पीपल विल नॉट बैक आउट। ये लगातार नारे लग रहे हैं, गो गोटा होम लग रहा है, अब रानिले गो होम भी नारे लग रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री का दफ्तर है। रानिले विक्रमसिंघे ने कर्फ्यू का ऐलान किया इस वेस्टर्न प्रोविंस में, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें दूर तक आप देखिए, अगर इस चौराहे की आप तस्वीरें देखें तो लोग यहाँ पूरी तरह से डटे हुए नजर आ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और तय कर दिया है कि अब यहाँ से इनको जाना ही होगा, ये तय कर दिया है। जिम्मेदार भाग जरूर खड़े हुए। किसी भी देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है बताइए कि जहां जिस राष्ट्रपति भवन से देश की तकदीर, जिस प्रधानमंत्री भवन से देश की तकदीर तय होती है, उस प्रधानमंत्री भवन को फांद कर जब आम जनता को अंदर जाना पड़े, जब विरोध दर्ज कराना पड़े, तो आप समझिए कि उस देश का दुर्भाग्य है ये। और यहाँ श्रीलंका का दुर्भाग्य है कि लोग इस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सालों लग जाएंगे इन राजनेताओं की टेढ़ी रीढ़ की वजह से इस देश की रीढ़ को सीधा करने में। सोचिए आप, सालों लग जाएंगे फिर वो दरार पाटने में जो दरार राजपक्षे परिवार के द्वारा आर्थिक कमजोरी की पैदा की गई है इस देश में, क्योंकि अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हाँ, आर्थिक जो पूरी व्यवस्था है, जो खराब नीतियां रही गोटाबाया राजपक्षे की, उसका नतीजा ये रहा कि सड़कों पर लोग उतर आए और लोग अब कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ लोग इंग्लिश में बात कर पाए। डू यू स्पीक इंग्लिश? Why you are protesting here? You will accept Ranil Wickremesinghe as a president or not? I know English. No English? देखिए, यहाँ पे सिंगली भाषा बोली जाती है, थोड़ी तकलीफ यहाँ पर इसीलिए हो रही। भाषा की मर्यादा है, लेकिन कोशिश करें। भाषा के एक बैरियर है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जो अंग्रेजी बोल पाए उनसे हम बात करें। डू यू स्पीक इंग्लिश? Do you accept Ranil Wickremesinghe as a president if Rajapaksa resigns? Will you accept Wickremesinghe as a president? No, these all are the game of thought. So we will put an end to this, sure. You will put an end to this if Wickremesinghe takes the charge? No Sri Lankan like Ranil Wickremesinghe to become a president even a single hour. देखिए, तो कार्यकारी राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते लोग विक्रमसिंघे को। लगातार श्रीलंका कोलंबो से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटे, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। And there you had it, my colleague Saloni, in fact, on the ground reporting from Colombo, showing you the images, viewers, really as to what's really happening in Sri Lanka, how the people of the country, in fact, have come out on the streets. They have been there for quite some months now, but now we are seeing more and more developments when it comes to the president that has fled the country, the prime minister that has been sworn in as the president as well, and we'll be getting you all the updates from the ground in Sri Lanka right after this very short break. A quick roundup of news in brief. Congress High Command is reportedly unhappy with Congress MP Manish Tiwari, who is part of the Consultative Committee for Defence in the Parliament after he refused to sign the opposition's memorandum seeking withdrawal of the centre's Agnipath recruitment scheme. There is an outrage within the Congress against Manish Tiwari, we are told, who has openly supported the Agnipath scheme contrary to Congress stand. Despite heavy rains in Kedarnath in Rudraprayag district of Uttarakhand, the journey to the sacred temple has resumed. Starting today, the rain has caused slight drop in the number of devotees as well travelling to Kedarnath. However, despite the rains and the roads that have been damaged as a result of these rains, pilgrims are enthusiastically seen continuing with their journey to the temple. And here's a look at some more news in brief. The National Investigating Agencies conducted searches at 9 locations in Rajasthan's Udaipur district in connection with the killing of a Hindu tailor, Kanhaiya Lal, last month. Now, the NIA has seized all digital devices and other incriminating materials, which will further help in the probe. Further investigations in the case are underway. Shocking footage shows the Coast Guard's flag and the Indian flag dumped in Kochi's Irupanam. The police have registered a case in the matter while further investigation is underway. Apart from the tricolour, Coast Guard helmets, uniforms and other accessories were also found in the dump.
Karnataka's Home Minister has announced that he will reduce jail term for prisoners if they reveal whether other inmates are using mobile phones or any other. दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हालात बद से बदतर हो गए श्रीलंका में। लोगों को हटाया जा रहा है, कर्फ्यू इम्पोज किया गया इस पूरे इलाके में और टीयर गैस छोड़ी जा रही है। लोगों को यहाँ से हटाने के लिए लोग भाग रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जो स्थिति है, हम आपको दिखा रहे हैं। टीयर गैस छोड़ी गई है यहाँ पर टीयर गैस छोड़ी गई है क्योंकि आप लोगों को यहाँ से टीयर गैस छोड़ी गई है यहाँ पर लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। हंगामा बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ये दफ्तर जहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है, देखिए लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। There you have it, viewers, the visuals, the very dramatic visuals that are coming to light from Sri Lanka now, where massive protests that had been going on since quite some few months, and now we are seeing a crescendo of those protests as well, as hundreds have thronged the streets, have also blocked the presidential residence as well. There had been some attempts to set fire to parts of the Prime Minister's private residence as well. Those were the images that we were putting out. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लोगों की आंखों से लगातार आंसू गिरे। लोगों के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया है यहाँ पर इस जगह पर। ये प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जहाँ लगातार प्रदर्शन श्रीलंका में चल रहा है। कर्फ्यू इम्पोज किया गया वेस्टर्न प्रोविंस की। आप तस्वीर देख रहे हैं, सड़कें खचाखच भरी हुई है लोगों से और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। नॉर्मल हालात नहीं है यहाँ पर। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि आंसू गैस का गोला लगातार छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, दूर तक लोग नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन लगातार मिलिट्री यहाँ पर लोगों को कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद हटा रही है और पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री उन्होंने लागू कर दिया। देखिए किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। चॉपर लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरें हम आप तक ले जा रहे हैं। देखिए लोगों की हालत खराब हो रही है, क्या सिचुएशन है देखकर समझना मुश्किल नहीं है। लोगों को ले जाया जा रहा है। पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर पहली तस्वीरें कैसे चॉपर्स घूम रहे हैं आप देख पा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो गए श्रीलंका के। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाएंगे हालात कैसे खराब हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये वो तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही है श्रीलंका की, लोगों का गुस्सा बयां कर रही है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन लोग हट नहीं रहे हैं, तितर बितर नहीं हो रहे हैं। पहले भागे लेकिन फिर एक बार फिर रुक गए। तस्वीरें हम आपको चॉपर्स की भी दिखा रहे हैं। लगातार किस तरह से ये देखिए चॉपर के जरिए यहाँ पर मिलिट्री चॉपर के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने तय कर लिया है कि वो रुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं और कहीं ना कहीं हाथ खड़े नहीं करेंगे जब तक सिंहासन खाली नहीं होता। विजय अभय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोलंबो, श्रीलंका। And that was my colleague Saloni once again getting you that ground report, viewers, that very detailed ground report as to what's really happening in Sri Lanka, and the images that she is also beaming with her video journalist on the ground really tells us the kind of situation that is deteriorating in Sri Lanka as well. And we had seen over the past few months how thousands of people had come out on the streets, and more people in fact throng the streets right now as we see a state of emergency that has been also levied in the entire country of Sri Lanka, and we are seeing that the president as well had fled the country, and the Prime Minister has been, as per the constitution, temporarily sworn in as the president as well. Apart from that, of course, we are seeing the kind of anger in the people of Sri Lanka, claiming that the economic crisis has only gotten deeper because of the people like the president that has fled the country and the Prime Minister in the country right now that did not take any steps whatsoever to save the citizens of Sri Lanka from this growing economic debt trap that Sri Lanka finds itself in today. And those are the images, those are the ramifications that we are seeing on the streets of an inaction that was there was absolutely no action that in fact that had been taken by the government there,
and that is the ramification on the streets that we are seeing of the citizens. The anger of the citizens, of course, very much palpable in these images as well, where the citizens had been claiming that they are not been even given basic facilities, and hence these protests had been going on by the normal people, the civilians there in Sri Lanka, claiming that the Prime Minister and the President were the ones who were supposed to take some kind of decision, but there were only continuous appeals that had been made by Rajapaksa as well. He had been saying that all the parties, all the political parties, even the opposition needs to come together. And those are the images, in fact, of those protesters that are on your screens right now. And we have our correspondents on the ground keeping you ahead on this story, getting you all those images from Sri Lanka. Lahiru Dolaswala, in fact, also joins me on the broadcast. Lahiru, if you can hear me, take us through what's really happening now. We saw those very dramatic images coming to light from Sri Lanka. The anger of the citizens only growing by the minute, isn't it? Yes, so all these protesters are now flocking towards the Prime Minister's office, and the Prime Minister's office is the center of attention for all protesters, and still they are still going towards that place, and there are no other places where the protest is taking place except for the Prime Minister's office. And the Prime Minister's office has also said that they are going to take control of the situation. We are also hearing that multiple choppers and helicopters are now flying over Colombo, monitoring the situation. The Prime Minister's office has also said they are going to take control of the situation, and the most dramatic scenes of Colombo are now happening in front of the Prime Minister's office. Well, that being said, Lahiru, we are seeing that there is some kind of decision that is being taken when it comes to the political decisions that need to be taken since the president has fled the country. But stay on with us. We also have Shanakian Ramanikam, in fact, who's also joining us on the broadcast. Sir, if I could come to you, what really is happening in Sri Lanka is pretty much evident from the images that are coming to light from the streets. The anger of the citizens is getting even bigger by the minute. But what's really expected as per the constitution for remedying this situation? Well, this is a man-made crisis from the beginning. The president himself is solely responsible, and now he has made the crisis even worse by fleeing the country without his resignation being given. So right now, Sri Lanka does not have a president, and we are slowly. It looks like we're moving into a constitutional crisis because the Prime Minister has issued a state of emergency and has declared curfew in the Western Province, and he is not legally authorized to do that because he's still not the president. To declare a state of emergency, he needs to be the president. However, with the president not resigning, the Prime Minister is acting out of the order. And also, the protests are intensifying because the president and the Prime Minister refuse to resign. On the 9th of July, the president promised that he will resign and that he will resign on the 13th. And it's almost 12 hours since the 13th of July has started, and the president still has not given his resignation. Sir, but if I may, sir, you're a politician yourself, and we have been seeing the kind of statements that have been made by the president, who has now fled the country as well. But I want to thank you for joining us on the broadcast and sharing your perspective with us as well. I want to also go across back to my colleague Saloni, who's been on the ground reporting for us from Sri Lanka. गोलों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि विक्रमसिंघे ने आदेश दे दिया है। ये वेस्टर्न प्रोविंस है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझे, ये वेस्टर्न प्रोविंस है और यहाँ कर्फ्यू और देखिए एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है क्योंकि लोग घायल हो गए, ले जाई जा रही है गाड़ियाँ और लोगों को इसमें जो घायल हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स हैं जो घायलों को लेकर जा रहे हैं। देखिए ये घायल को यहाँ अंदर ले जाया जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार भगदड़ की भी स्थिति है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंखें जल रही है लोगों की। हमारे लिए भी ये समस्या है। हम लोग लगातार चेहरा पानी से धो रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शनकारी भी वही कर रहे हैं। देखिए वहाँ की तस्वीर दिखाइए जरा, वहाँ की तस्वीर दिखाइए जरा। यहाँ सड़कों पर देखिए
श्रीलंका के लोग अब तय कर चुके हैं। और देखिए ये तस्वीरें पानी की बोतल्स, क्योंकि लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में पानी की बोतल्स फेंकी जा रही है जिससे कि लोग अपना चेहरा धो सके, मुंह धो सके। लगातार मिलिट्री का चॉपर ऊपर घूम रहा है, लेकिन लोग रुक नहीं रहे। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे पानी की बोतल्स फेंकी जा रही है लोगों के बीच। और अब गो गोटा गो के नारे के साथ गो रानीला गो के भी नारे लग रहे हैं। यानी विक्रमसिंघे ने जो इमरजेंसी इंपोज की है, आपातकाल इंपोज कर दिया है श्रीलंका पर, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पूरी सड़कें खचाखच भरी, आप देखिए पूरी सड़कें खचाखच भरी है। और ये वेस्टर्न प्रोविंस है जहां पर कर्फ्यू इंपोज किया गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको लाइव एक्शन की दिखा रहे हैं कोलंबो श्रीलंका से। रिपब्लिक हर एक तस्वीर आपके सामने रख रहा है। श्रीलंका की जो आपात स्थिति बनी हुई है, वहां पर किस तरह से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए लगातार एम्बुलेंस से लोगों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं, हालात लगातार खराब हो रहे हैं, इसलिए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो ये आज तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वर्षों का गुस्सा है, दशकों का गुस्सा है राजपक्षे परिवार के खिलाफ, जो लोग इस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। और साफ तौर पर लोगों ने उद्घोष कर दिया है कि अब किसी तरह की मनमर्जी, भ्रष्टाचार, मनमानी, पैसों की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हर तरफ आपको लोग नजर आएंगे, पूरी तरफ सड़कों पर अगर हम आपको दिखाएं तो दूर दूर तक लोगों का हुजूम आप देख पाएंगे। और साफ तौर पर श्रीलंका की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो फूड सप्लाई है वो ठप है, पावर सप्लाई है वो ठप है, दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है देश। और लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय किया है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें जवाब देना होगा, चाहे वो रानीला विक्रमसिंघे हो, चाहे वो गोटबाया राजपक्षे हो, चाहे वो महिंद्रा राजपक्षे हो, राजपक्षे परिवार हो, उनको जवाब देना होगा। और लोग झंडा लेकर पहुंचे हुए, झंडा भी आप देख रहे हैं श्रीलंका का। लगातार ये पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई है। और ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये वर्षों का गुस्सा है, सालों का गुस्सा है, जो आज फूट पड़ा है लोगों पर। और साफ तौर पर देखिए लोग अब खुद हटा रहे हैं बैरिकेडिंग्स। अब है तस्वीरों दिखाइए, बैरिकेडिंग्स लोग हटा रहे हैं। लोग यहाँ पर दरअसल जिस तरह से इन्हें रोका जा रहा था उसकी खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और पूरा रास्ता लोग खुद खाली कर रहे हैं। देखिए लोगों ने अब हाथ में ले लिया है सब कुछ, चाहे वो यहाँ का कानून हो, चाहे वो यहाँ की व्यवस्था हो। लोगों ने साफ कर दिया है कि अब न्याय वो खुद करेंगे, क्योंकि जो राजनेता थे जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जो जिम्मेदार थे, वो पीछे के रास्ते से फरार हो गए। वो अगर बात करें गोटबाया राजपक्षे की, तो मालदीव्स में है और दुबई जाने वाले ये कहा जा रहा है। जिम्मेदार फरार हो चुके हैं, लेकिन जनता सड़क पर उतरकर अब जवाब मांग रही है। लगातार ये तस्वीरें आपको श्रीलंका से दिखा रहे हैं। देखिए आगे अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर ही आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है और वेस्टर्न प्रोविंस में पूरी तरह से कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। लोगों ने अब खुद तय कर लिया कि पूरा रास्ता खाली करेंगे। देखिए बैंड्स लगाए हुए हैं गो गोटा गो के, और लगातार यहाँ लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। 1 बजे की जो टाइमलाइन थी, 1 बजे का जो समय था, वो खत्म होने वाला है। 1 बजे की टाइमलाइन दी गई थी। देखिए बैरिकेड्स कैसे हटाए जा रहे हैं। साथ में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं वो बता रहे हैं श्रीलंका के लोग दरअसल आजिज आ गए श्रीलंका के लोग। एक देश जिसके राष्ट्रपति ने सिर्फ अपने लिए पैसे बनाए, चाइना से नजदीकियां की तो अपनी जेबें भरी। And Saloni there getting us all the updates when it comes to what's really happening on the ground there, viewers. And as she was also pointing out, the anger of the citizens and crescendo there on the streets. And we are in fact getting you several voices from Sri Lanka as well.
Azad Sali, the former governor of the Western province of Sri Lanka, is also joining us on the broadcast. Azad Sali, in fact, if I could come to you, sir, what's really happening there in Sri Lanka? The kind of anger of the citizens, in fact, growing by the minute. But the question still remains, the president has fled the country. What next, and what can really be done by the politicians to remedy the situation so that there can be some relief to the citizens? Actually, that is a very pertaining question that you asked me. The president of Sri Lanka has left the country, or virtually fled the country, and his letter of resignation has still not been given. People are still waiting because he had the speaker announced to parliament and to everybody that the president is intending to resign on the 13th, and the letter will be sent to me. But up to now with the time is 12:45, and up to now the president's letter of resignation has still not reached the public or announcement being made. And also, this is not a time for the opposition to play games. This is a time for all politicians, everybody, every citizen of this country to get together to build Sri Lanka as and to bring the country into a stable situation. This is what every politician should be doing, but we can see the opposition trying to play games because we have to go by the constitution and nothing to change the constitution. And if parliament has announced that the Parliament will meet to elect a president on the 20th. So today to the 20th, you need a cabinet of ministers sitting and deciding on things. Now we don't have fuel, we don't have gas, we don't have medicine. All these have to be met by the cabinet, and approval has to be given by the cabinet to import these things, or to order these things, or to open a LC. All that approval has to come from cabinet. So if the opposition is trying to play politics, I don't think we will succeed in anything. So it's high time the religious leadership get together and tell the opposition that what you are doing is wrong. And we see the Bar Association of Sri Lanka, the Sali. But sir, if I may, we are way past that point, don't you think so? Because the president has already fled the country. Of course, as per the procedure, the prime minister has been sworn in as the president as well. But going forward, what decision needs to be taken? Because the problem has not been solved for Sri Lanka. The debt trap that the country is still in, what ramifications will it have, and what kind of decision needs to be taken to rebuild the country now? No decision can be taken because the president has only fled the country. President has not tendered his resignation yet. President's letter of resignation must be tabled and that be announced by the speaker. Only after that the prime minister becomes acting president. Right? The prime minister takes over, and till the 20th he has to act for 7 to 8 days to act as acting president. This opposition is not allowing. They are issuing statements over, and they are instigating people to come before the Prime Minister's office, demonstrate that. You see the entire President's house, the temple trees, then the President's office, all have been totally destroyed. Right? The archaeological department has now gone to see what are the valuable things that are there, what are missing and all that. So you can't allow this to happen. So this is a time that everybody has to come together, tell these boys also that what you are doing is wrong. Right? Now at least get out of those places, clear these places up. That gives a very wrong image of Sri Lanka. This is the most important thing. You can't do this international image on Sri Lanka. We had a good name, we had a good image, we had a good brand name, Sri Lanka. That brand name is destroyed by the former president, and more than that, is now being destroyed by the opposition. This is the worst characters that we can see today. So they are only interested in coming to power and not interested in solving the country's problem. So all have to get together and support the present Prime Minister to come out of this mess. And after that, you do whatever you want, because we have to work in a democratic framework. We have to work according to the constitution of Sri Lanka. We have a parliament with 225 members. You sit there and discuss and do whatever changes you all want. But for God's sake, leave your damn politics. Leave your damn politics. Leave your damn politics. Get together for the sake of the country to save the name Sri Lanka. That is absolutely. All right. Azad Sali there, the ex-governor of the Western province of Sri Lanka. Thank you for joining us on the broadcast with that perspective. But of course, the images still really remain from Sri Lanka, telling us the real story of what's really happening on the ground, the citizens of the country. और अभी हम फिर आगे बढ़ रहे हैं. देखिए यहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए. थोड़ा तितर बितर जनता यहाँ हो गई है. तितर बितर जनता हो गई है. चॉपर यहाँ पर आसमान में नजर आ रहा था. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. एक बार फिर जो प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर घुस गए थे प्रदर्शनकारी. कई लोग घायल भी हुए हैं. कर्फ्यू इस पूरे इलाके में इम्पोज किया गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं. लोग रुकने को तैयार नहीं हैं. लोगों का कहना है कि जब तक
देखिए 1 बजे तक का समय था और सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। 1 बजने में 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था लोगों की तरफ से और यही वजह है कि लोग लगातार अभी भी सड़कों पर है। देखिए हम अभी भी लोगों की है, अभी भी लोगों की भारी भीड़ है, लोग हटे ही नहीं है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बल प्रयोग किया गया। And thousands on the streets, viewers, tracking those images for you very, very closely. Out on the streets, anger on the crescendo. The protests continue in Sri Lanka as citizens claim that the politicians of the country have not looked out in their best interests and in fact have led Sri Lanka to a deeper economic crisis, the ramifications of which we are seeing on the streets of Sri Lanka as thousands of the citizens, of angry citizens, throng the streets and demand answers. And we had been learning of the kind of developments that have also been taking place in Sri Lanka, where the emergency has been levied, and of course, as the president, Rajapaksa as well, has fled the country. And of course, as per the constitution, the sitting prime minister, in fact, will be sworn in as the president. And of course, there will be several statements that we had heard from the political fraternity of Sri Lanka coming in, claiming that there will be an all-party meeting that will take place to remedy the situation. Words like swift resolution had been used by the political fraternity of Sri Lanka. But right now, of course, we are seeing the authorities on the streets trying to pacify the anger of thousands of citizens who have been demanding answers from the president, from the prime minister, then by coming to the streets and then also marching straight inside the president's residence and claiming that this is the property of the public. And these are the politicians, in fact, who did not look out in the best interest of their citizens, of its electorate. And that is why we see the ramifications of that kind of an anger out on the streets of Sri Lanka, claiming that these are the politicians who did not get them out of this debt trap. And viewers, that is a very massive developing story that we are tracking for you from Sri Lanka. We'll be tracking for you all the updates right after this very short break. Getting a cab these days is nearly impossible because half the time you don't get rides. Even if your cab gets booked, you're not sure when it is going to get cancelled or how much you're going to pay. Now, answering all this, Mind has come up with beautiful solutions whereby we don't have a surge rate here because they go by government prescribed rates. Not just that, Mind has a beautiful feature where you incentivize the driver, ensuring that he will come and pick you up on time. So, thanks Mind. A group of nearly 8 terrorists tried to sneak in via the Poonch line of control in Jammu and Kashmir. An infiltration attempt was witnessed during the midnight along the line of control. Indian Army has neutralized 3 terrorists on the spot in heavy firing. Now, this comes just days ahead of the Amarnath Yatra. The AIADMK's interim General Secretary EPS and ousted party leader OPS moved the Madras High Court against the sealing of the party headquarters by the Tamil Nadu government on the 11th of July. The High Court is likely to hear the matter today. In a heart-wrenching incident in Pune's Kher Taluka, 3 children have lost their lives after falling into a huge pothole. As per the complaint that has been given by the father of these children, his children lost their lives after falling into a huge pothole in Ambethan area of Kher Taluka of Pune. The Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar has the Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar has revoked a circular which mandated that no FIR needs to be filed for molestation or under the POSCO Act should be registered without the Zonal Deputy Commissioner of Police's permission. A
quick roundup of news in brief. Congress High Command is reportedly unhappy with Congress MP Manish Tiwari, who is part of the Consultative Committee for Defence in the Parliament after he refused to sign the opposition's memorandum seeking withdrawal of the centre's Agnipath recruitment scheme. And cutting across back to those visuals that are coming to light from Sri Lanka, viewers from Colombo, in fact, where thousands of protesters are still marching on the streets, not budging from where they are, even after we saw those dramatic visuals of a tear gas being lobbed as well at the angry protesters by the authorities to pacify these kind of protests that have been breaking out in Sri Lanka. And even now today, since the state of emergency has been divided in the country and thousands of citizens are still out on the streets demanding answers from their politicians, and we have been seeing images like these coming to light since over the past few months, and where thousands of citizens in fact have been saying that these politicians did not do anything to help them come out of this economic crisis, this debt trap that Sri Lanka finds itself in. And as per the procedure of the constitution, and we have seen how the president has fled the country, and it means that the sitting prime minister, if the president resigns, will function as the president as well till at least the parliament elects a new president. And on that note, let me also bring in our senior executive editor Abhishek Kapoor on the broadcast. Abhishek, we are seeing these very dramatic images coming to light from Sri Lanka. The anger of the citizens really hitting a crescendo when it comes to the protests that have been carried out. But speak to us a little bit about the procedure going forward and what can really Sri Lankan political fraternity do to remedy this situation, Abhishek? Priyanka, so the procedure is as per Article 40 of the Constitution of Sri Lanka as it exists today, in case of a vacancy in the office of the President, in case of a vacancy in the office of the President, in case of a vacancy of the office of the President, the Prime Minister takes over in the interim, and then the Parliament from among its members has to determine who can be the next President, and then the charge is given to that person. So it seems that as of now, with the formal announcement of resignation of Gotabaya Rajapaksa is still awaited. We are told that in a while the Speaker is going to do that. The resignation has already been sent to the office of the Speaker. It is for the Speaker to announce. Following which the Parliament convenes on July 15th, which is day after tomorrow, on which day the resignation would be accepted. In the interim, as things exist, Wickremesinghe, who is the Prime Minister, takes over as the President for the time being. And then on July 20th, the Parliament meets again and the members of the Parliament determine who would be the President. Most likely it is that Sajit Premadasa, Priyanka, he could be the President. He's the leader of opposition as of now, and given the fact that there is nobody else left, it's likely that he might be given the mantle. It's a difficult time to, head the Sri Lanka government, and we have seen how of late, even army is becoming active. We are seeing pictures of the Air Force choppers flying low, like we see in these pictures. And right, before that, we have seen yesterday, Priyanka, how army has taken over the state television. So I think things are fluid, and the pictures really speak for themselves. Well, absolutely, Abhishek, they're explaining the entire procedure for us as well, viewers, and we are going to take a small break and come back with Abhishek as well to understand more as to what's expected for Sri Lanka going forward. In the latest Indian university rankings announced by QS, the world's leading university rankings organization, India's #1 ranked universities in various categories are IISc Bangalore, IIT Bombay, University of Delhi, University of Calcutta, and Amity University. And here's a look at some more news in brief. The National Investigating Agencies conducted searches at 9 locations in Rajasthan's Udaipur district in connection with the killing of a Hindu tailor, Kanhaiya Lal, last month. Now, the NIA has seized all digital devices and other incriminating materials, which will further help in the probe. Further investigations in the case are underway.
Shocking footage shows the Coast Guard's flag and the Indian flag dumped in Kochi's Irupanam. The police have registered a case in the matter while further investigation is underway. Apart from the tricolour, Coast Guard helmets, uniforms and other accessories were also found in the dump. Karnataka's Home Minister has announced that he will reduce jail term for prisoners if they reveal whether other inmates are using mobile phones or any other banned substances inside the prison. Now, he further added that a reward of 2,000 rupees will be given to police personnel who cite these malpractices. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now, following the Karnataka Home Minister's announcement on the reduction of the jail term, opposition has slammed him, questioning his constitutional right to do so. Opposition said that the Karnataka Home Minister has lost trust in his own police and hence is seeking help from prisoners to help them cite other inmates involved in illegal activities. Punjab's Advocate General A.G. Sidhu was attacked by unidentified people while he was travelling via train. Some unidentified people pelted stones at him near Panipat. The AG filed a complaint to the police for further investigation. Punjab Advocate General appeared in the Supreme Court in the Lawrence Bishnoi case yesterday. In another jolt to the Uddhav Thackeray camp, the Yuva Sena leader Vikas Gogawale has joined Eknath Shinde's camp. Vikas was seen at the Chief Minister's residence last night, formally extending support on the occasion of Guru Purnima. He also claimed that more than 50 office bearers of the Yuva Sena will join the Shinde camp this week. A group of nearly 8 terrorists tried to sneak in via the Poonch line of control in Jammu and Kashmir. An infiltration attempt was witnessed during the midnight along the line of control. Indian Army has neutralized 3 terrorists. Top headlines this afternoon: complete chaos in Colombo, state of emergency declared by Wickremesinghe. Law and order goes for a toss. Thousands hit streets. Massive protests break out of open large-scale loot. Tear gas shells also fired. Country mess. Lankan outgoing president Gotabaya Rajapaksa flees to Maldives for layover. Final destination not known. NCP pins down Ria's role, says Ria was in touch with drug peddlers, supplied drugs. Three-layered mega Ria role in drug case. She procured, she was in touch and funded and supplied drugs as well. Lutyens' campaign to save Ria has now officially flopped. Shocking attack by Vadra Congress on Draupadi Murmu, says she represents evil philosophy. BJP retorts, says attacked for tribal background. Good afternoon, viewers. I'm Samiksha Srivastava, tracking all the latest on Sri Lanka crisis, which has only snowfalled. Hundreds and thousands of protesters have now taken to streets. Emergency has also been declared. Meanwhile, Wickremesinghe has been sworn in as the acting president, as per reports. So we have our senior executive editor Abhishek also joining us on the phone line. Abhishek, if you could talk us through the situation that is unfolding in Sri Lanka as we speak. Samiksha, the situation is dire and law and order situation is absolutely out of control, and that's why we have seen even the army getting concerned, and that's why, for example, the army choppers coming out, flying low, and we have seen instances of police, of course, using tear gas shells to control the mob. We had seen how they had put to fire private residence of Prime Minister Wickremesinghe. 2 attempts of the Rajapaksas to escape did not fructify. Finally, the Air Force had to shepherd them out, and the fact that the United States have refused to
give visa to the Rajapaksas. They have landed in Maldives. In fact, it's creating problem in Maldives as well. We have latest coming in from the Maldives National Party, which is in opposition, which has the parliamentary group of that party has petitioned the Speaker of the Maldives Parliament asking, or they are putting a motion in the Maldives Parliament asking on what grounds and why President Gotabaya of Sri Lanka was given refuge in Maldives. So I think the situation remains very volatile. And but the important point is that the protesters also have to realize, unless they calm down, unless law and order prevails, it would be very difficult for the next government to take over. Their anger is justified. Their angst is justified. The fact that basic items like a packet of biscuits, which was available for 5 rupees, is now available for 30 rupees or even 50 rupees. A loaf of bread is available for almost $200, which was earlier available for 30 rupees, 40 rupees. Is obviously creating a crisis of just being about to manage to live properly. And that's why all these people have gathered. They are not from just Colombo, Amisha. All these protesters we see have come from across the hinterland of Sri Lanka, hoping that these protests would ultimately lead to some sense prevailing among the ruling elite. We have seen that despite his best efforts, Wickremesinghe also could not help much. Of course, he also became guilty by association of not really getting rid of the Rajapaksas. The real anger, if you look at it, is against the Rajapaksa clan, the family. At one point in time, Samiksha almost controlled 70% of the Sri Lankan budget. They have been accused of hobnobbing with the Chinese establishment and the deep state and enriching themselves at the cost of Sri Lanka. Sri Lanka getting into a debt trap. There is a Lotus Tower that has come up in Colombo, in this very area where these protests are taking place. Imagine, just for vanity's sake, it's a Chinese project, Chinese company given this project, $100 million, no revenue, except for some vanity that they have a 300-meter tall tower modeled on the lines of Shanghai Tower in Colombo, tallest tower in South Asia, 300 meters plus, but that has added to the debt of Sri Lanka. Similarly, Hambantota, similarly the port project of Colombo, port city Colombo, and these have, apart from all these projects, apart from having created security concerns in the region with the Chinese ingress, they have also landed Sri Lanka in good measure because of these projects that Sri Lanka is. All right. Yes, Abhishek, stay with us. We'll just come back to you. Saloni is getting us ground updates. Let's take a look. चुके हैं मालदीव जा चुके हैं दुबई जाने वाले, लेकिन जनता सड़कों पर आ चुकी है और पूछ रही है उन सत्ताधीशों से सवाल जिसने श्रीलंका की किस्मत के साथ इतना बड़ा मजाक किया। लगातार आर्थिक स्थिति खराब होती गई, लेकिन फैसला नहीं लिया गया राजपक्षे परिवार की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने का फैसला लिया गया और अब जनता कह रही है सड़क पर आकर कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो। श्रीलंका की ये तस्वीर, धधकती लंका की ये तस्वीर अब इंसाफ की मांग कर रही है उन जिम्मेदारों से जो पीठ दिखाकर फरार हो गए हैं। विजय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोलंबो, श्रीलंका से। Our senior executive editor Abhishek continues to be with us. Abhishek, what do you think is the way out? The situation we see on the ground right now is only spiraling from what the visuals show us. Samiksha, I was coming to that. So the protesters also, the fact of the matter is this is an absolutely organic protest with people coming in and there is no particular leader. It's just that a group of people comes and they start protesting, and these have been going on for a couple of months. In fact, similar scenes were seen exactly 2 months back when the protesters got after the then Prime Minister Mahinda Rajapaksa and then he had to flee. Since then, they have been protesting at what is called the Gaul
protest site or the Gota Gogama protest site where they were ultimately wanting Gotabaya to go. And now that Gotabaya has gone, thereafter the Prime Minister Ranil Wickremesinghe पोस्टर बैनर लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें देखिए और वहां पर वापस टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में थोड़ी मुश्किल यहाँ पर हो रही है, लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं वहां तक एक बार फिर से दिखाने की तस्वीरें देखिए। दरअसल राजपक्षे अब फरार हो चुके हैं, वो जा चुके हैं मालदीव्स के माले बताया जा रहा है और वहां से दुबई उनकी जाने की तैयारी है। लोग झंडा पहनकर आए हैं, ये श्रीलंका का झंडा है और इस पर जो शेर बना हुआ है उसी तरह के अंदाज में शेर बनकर लोग सड़कों पर उतरकर सत्ताधीशों से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि आखिर 2 दशकों की सत्ता में राजपक्षे परिवार ने या विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के लोगों के लिए क्या किया, उनके उत्थान के लिए क्या किया, उनके विकास के लिए क्या किया। देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों को एकजुट करने के लिए सिंधी भाषा में अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, क्योंकि लोगों को समझाया जा रहा है कि ये मुश्किल हालात हैं, इसमें आप कहीं जाइए मत, आपको बने रहना है, आपको इस संघर्ष को जारी रखना है, लगातार संघर्ष जारी रखना है। ये लोगों को समझाया जा रहा है, हम अगर सड़कों की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ लोगों ने दरअसल सवाल किया है कि आखिर पहले जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा गया कि जनता का उत्थान कैसे होना है, जनता का विकास कैसे होना है, आर्थिक समस्या कैसे हल हो, किस तरह से फ्यूल रिफिलिंग की जो समस्या है उसको ठीक। गैस के गोले छोड़े गए, जनता इस तरफ भागती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हालात बद से बदतर हो गए। देखिए पानी की बोतल, आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर आ रही है, कार्टन्स 100 कार्टन्स 1000 कार्टन्स पानी बोतल यहाँ पर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इसी के जरिए लोग मुंह धुलकर लगातार यहाँ डटे हुए हैं। अनाउंसमेंट भी किस तरह से हो रही है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार सिंगली भाषा में लोगों को ये समझाया जा रहा है कि उन्हें ये स्ट्रगल, ये संघर्ष जारी रखना है जब तक फैसले की घड़ी नहीं आती। देखिए लोग मुंह धो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का जिस तरह इस्तेमाल किया, लोगों की आंखें जल रही हैं, ट्रकों में भर के लाई जा रही है, लोगों को दी जा रही है और लोग उसका इस्तेमाल श्रीलंका में So several such visuals that are coming from Sri Lanka at this point. You can see unprecedented crisis that is unfolding in Sri Lanka as we speak. Hundreds and thousands of protesters have taken to streets to protest against Rajapaksa and his family. So a lot of anger, massive outrage there among the people, and the biggest leads of course with Republic. Reporting from the ground, getting you all the latest updates. We are told that Ranil Wickremesinghe is now the acting president of Sri Lanka, and this was reported just minutes after state of emergency that was enforced in the country in week. लगातार अपना चेहरा धुल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है उससे लोगों का चेहरा जल रहा है, आंखें जल रही हैं, लोगों के लिए दिक्कत आ रही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने अब ये तय किया हुआ है कि वो सवाल पूछेंगे ही, क्योंकि नीतियां अभी तक तय नहीं की गई, कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई जिससे जो ये आर्थिक दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए
कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हमीद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये उसका साक्षात्कार बता रहा है कि ISI, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को ISI के साथ साझा किया गया भारत को कमजोर करने के लिए। भारत पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कांग्रेस की सरकार 2005 से 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है, वो भी हमीद अंसारी जी देते हैं। वही जानकारी हमारे देश की सेना, हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो देश की जनता यह पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी यह नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। और इसीलिए देश की जनता आज व्यथित है। हमीद अंसारी जी को इस देश की जनता ने आदर दिया, सम्मान दिया, संवैधानिक पद पे वो रहे, वो इस देश की जनता का आशीर्वाद था। बदले में उन्होंने क्या दिया? क्या ये कांग्रेस पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही इस साक्षात्कार में जो दूसरी बात आई है जो बहुत चिंताजनक है, नुसरत मिर्जा, इनको 2010 में आप मेहरबानी देखिए, यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह मेहरबानी कैसी? हमीद अंसारी जी ने इन पत्रकार महोदय को आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और बुलाया और कहा कि आप भारत को सीख दीजिए, यह बताइए कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे लड़ें। एक मुल्क जिसे पूरा विश्व जानता है कि वो केवल आतंकवाद का व्यापार करता है, आतंकिस्तान उसका नाम है, पर्याय है, वो व्यक्ति जो ISI से भारत की अति संवेदनशील जानकारी को साझा करता है, उसको निमंत्रण देके बुलाया जाता है कि आप भारत आइए। जिस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं उस देश को बताइए कि आतंकवाद से लड़ना कैसे। यह है कांग्रेस पार्टी की जहरीली सोच, यह है कांग्रेस पार्टी की नीति आतंकवाद से लड़ने की। एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की अखंडता को मजबूत कर रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा करेंगे, यह हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सोच है। और जब यह तथ्य स्वयं पत्रकार नुसरत मिर्जा ने साझा किया
तो यह स्वाभाविक है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, हर नागरिक को चिंता हुई, हर राजनीतिक दल को यह सवाल पूछना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, यह तथ्य भी साक्षात्कार से ही उठाया गया है, यह सवाल है, जो प्रक्रिया है, सरकार किसी भी व्यक्ति को जो भारत का दौरा करता है वीजा देती है। तो आप वक्तव्य सुनिए पाकिस्तानी पत्रकार का, कहता है कि वैसे तो वीजा 3 शहरों में जाने का मिलता है भारत में, लेकिन मुझे 7 शहरों में जाने का वीजा मिला। तेरी मेहरबानियां, 3 क्यों, 7 शहर जाओ, वहां का अध्ययन करो, जो जानकारी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा रेकी करो, पूरा अध्ययन करो और उसके बाद वो साझा करो। जो वो खुद कबूलता है मैंने साझा करी। अब ये प्रश्न, कुछ प्रश्न हमीद अंसारी जी से हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी से हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तो शायद देश में नहीं है, लेकिन यह आशा जरूर है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला, जब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि यूपीए कांग्रेस शासन की सरकार में एक पाकिस्तानी पत्रकार हमीद अंसारी जी के न्योते पे Well, we continue with a live coverage on the situation that is only spiraling out of hand in Sri Lanka. As you can see there, the visuals of the protesters who have gathered in large numbers again. आगे 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 गाड़ियां जा रही हैं, लोगों को ले जाया जा रहा है, लोगों को लगातार ये अपील की जा रही है, जो लोग आंसू गैस के गोलों से पीछे हट रहे हैं। Sir, you are continuously appealing people to go there. Yes. So that they can make it strong. Can you please say it on the camera? Yeah. All people is gone out of the Ranil. Don't like your Ranil, Prime Minister and President. All like to another people is the President and Prime Minister. Very bad fellows are Ranil and the Paka man, Gotabe. It's a very dangerous man. He's political is Bachul and Regulation. Who do you want as a President? Who do you want? Who's the Aragal? Some people is asking who's the take sometime Sajid, sometime Antakumar Dishanak, I don't know. Everybody is like that people after some time this Prime Minister is the President. After that good country, no petrol, no gas, no like that. Already that's not a problem Sri Lanka. तो आपने सुना, एक अच्छा देश, ये कह रहे थे कि इट वाज अ गुड कंट्री, लेकिन अब नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो फूड, नो सप्लाईज, यानी जो समस्या है मूलभूत बुनियादी चीजों की हम बात करें तो 470 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं लोग यहाँ पर, और वो भी ब्लैक में जब मिलता है तो सोचिए आप दाम कितने ऊंचे होते होंगे। खाने पीने की जो चीजें हैं वो 3 गुना से 4 गुना दामों में बिकती हैं, लोगों को खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि उनका घर परिवार है, नौकरी नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो वो कैसे अपना सब कुछ चलाएं, कैसे अपना सब कुछ मैनेज करें, ये उनके सामने चुनौती बनी हुई है। आपने सुना कि विक्रमसिंघे के लिए, रानी विक्रमसिंघे के लिए भी कह रहे थे कि ये लोग बुरे हैं, ये लोग बुरे हैं और इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर राजपक्षे की, तो राजपक्षे तो साफ तौर पर चले गए हैं, मालदीव्स माले में हैं, दुबई जाने की खबर है, और राजपक्षे का ही एक्सटेंशन लोग मानते हैं विक्रमसिंघे को एक्सटेंशन मांगते हैं। लोगों का कहना है कि विक्रमसिंघे भी उन्हीं की तरह हैं और उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि अब जनता सड़कों पर आ गई है, सवाल पूछ रही है और कह रही है कि सत्ताधीशों को बदलो, जो सत्ता पे सवार रहे हैं, जिन्होंने अपनी भलाई की है, सिर्फ जनता की भलाई नहीं की, जनता के लिए कुछ नहीं किया, वो जवाब दें और जवाब देकर सिंहासन को खाली करें, ये कह रही है जनता। और यही वजह देखिए, लगातार अबे तस्वीरें दिखाइए, फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल, लोग भाग रहे हैं, लोग उल्टी
तरफ आ रहे हैं क्योंकि टीयर गैस का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है। देखिए देखिए लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये धुएं का गुब्बार जो देख रहे हैं आप, ये टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ लगातार हो रहा है। मिलिट्री लोगों को रोक रही है, लेकिन लोग रुकने वाले नहीं हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि अब यहाँ पर सत्ता बदलेगी, सत्ता करने का तरीका, सत्ता हासिल करने का तरीका बदलेगा और ये वक्त आ गया है परिवर्तन का। लोग ये संदेश लगातार दे रहे हैं और इस संदेश का समर्थन करने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ है। बेहद दयनीय हालात है। इस देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। रोजी रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं। अपना आलीशान भवन छोड़कर जिम्मेदार कहीं लापता हैं, प्रधानमंत्री लापता हैं, तो राष्ट्रपति फरार है। ये वो परिवार है जिसने वर्षों तक श्रीलंका पर राज किया और सिर्फ अपने परिवार का कल्याण किया है, सिर्फ अपने परिवार का कल्याण किया है, सिर्फ अपने परिवार का। और भ्रष्टाचार से संलिप्त रही है सरकार, जिसकी आज श्रीलंका की जनता सड़कों पर है। आह निकल रही है श्रीलंका की जनता की सड़कों पर उतरकर और साफ तौर पर पूछ रही है कि इतने समय तक गद्दी पर बैठाया तो क्यों बैठे। और ये देखिए, ये आर्मी यहाँ से जा रही है। आर्मी जब जा रही है तो लोग जश्न मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। आर्मी यहाँ से जा रही है, लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि लोगों को ये अपनी जीत लग रही है। आर्मी इलाके को खाली करा रही थी, अब लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने आर्मी को भी खदेड़ दिया, वो सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। और तस्वीरें देखिए, लगातार ये तस्वीरें देखिए, आर्मी के जवान जा रहे हैं, आर्मी के जवान जा रहे हैं और उन्हें साथ में ले जाया जा रहा है, उन्हें छोड़ा जा रहा है, ले जाकर उन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है बाहर तक, क्योंकि यही वो जवान थे जो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे। तस्वीरें सबसे पहले आपको रिपब्लिक नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। हर सूरत हाल रिपब्लिक नेटवर्क पर आपको दिखाते रहेंगे। रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। And on that note, let's also take a look at some of the reports that have been filed from ground zero on the situation being seen in Sri Lanka. जानकारी मिल रही है कि मालदीव्स चले गए हैं और वहां से दुबई भी जा सकते हैं, जो जानकारियां मिल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर और देखिए यही वो जगह है जहां से संघर्ष शुरू हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस को पूरी तरह से घेर लिया प्रदर्शनकारियों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। और अभी भी अगर हम आपको दिखाएं, अभय से मैं कहूंगी दिखाएंगे किस तरह से लोग यहाँ अपना पूरी तरह से बैठे हुए हैं और प्रदर्शन दिन हो या रात, 24 घंटे ये जगह खाली होती नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, अगर देखें लोगों में नाराजगी है और हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ आर्मी ने, ये मेन एंट्रेंस है, प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी ऑफिस का मेन एंट्रेंस है और आर्मी डिप्लॉय है। उनका रोष है ये जो वो सामने आ रहा है और भावुक होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब उन्हें वापस भेजा जाएगा, विक्रमसिंघे को भी वापस भेजा जाएगा, ये बात कह रहे हैं लोग। और लगातार आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा था अब, लेकिन जो मिलिट्री के अधिकारी वहां थे उन्हें अब हटा दिया गया है। जनता ने यहाँ पर उसे अपनी जीत समझा है, जश्न मनाया है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं किस तरह से रिपब्लिक पर आप देख रहे हैं कि जनता जब यहां से उनको लेकर जा रही थी तो वो जो हुजूम था उसमें जश्न का माहौल था, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन तो करेंगे ही। और मिलिट्री के अधिकारियों को भी रोक दिया उन्होंने, आंसू गैस का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा था उसे भी रोक दिया है, कर्फ्यू लागू कर दिया है विक्रमसिंघे ने इस पूरे वेस्टर्न प्रोविंस में। और साथ ही देखिए आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। लेकिन लगातार हर तस्वीर हम आपको रिपब्लिक नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। यहाँ रुक रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटे, बने रहिए रिपब्लिक के साथ। लंबे समय तक राज करता रहा, जिसके बाद लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई, परेशानी खड़ी हो गई। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, अगर आप पूरी तरह से देखें, यहाँ पर जो ये हाथ में तख्ती लिए हुए दरअसल सिंगली भाषा में लिखा हुआ है। बाकी भीड़ है यहाँ पर, मौजूद है, देखने की कोशिश कर रही हूं मैं। लेकिन देखिए तुरंत ही एक व्यक्ति को लगाया गया आपात स्थिति में
क्योंकि जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो रहा है उससे लोग मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं, आंसू निकल रहे लोगों के। हमारी भी स्थिति वैसी है क्योंकि आंसू गैस के गोले जब इस्तेमाल किए जा रहे थे लोग लगातार अपना मुंह पानी से धुल रहे हैं। हमने भी कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर रह रहा है जिसकी वजह से लोग घायल हो रहे हैं। अभय तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। अभय, हर तस्वीर पब्लिक पर आप दिखाने की कोशिश करें। देखिए भीड़ एक बार फिर भाग रही है, लगातार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल है। A quick roundup of news in brief. Congress High Command is reportedly unhappy with Congress MP Manish Tiwari, who is part of the Consultative Committee for Defence in the Parliament after he refused to sign the opposition's memorandum seeking withdrawal of the centre's Agnipath recruitment scheme. There is an outrage within the Congress against Manish Tiwari, we are told, who has openly supported the Agnipath scheme contrary to Congress stand. Despite heavy rains in Kedarnath in Rudraprayag district of Uttarakhand, the journey to the sacred temple has resumed. Starting today, the rain has caused slight drop in the number of devotees as well travelling to Kedarnath. However, despite the rains and the roads that have been damaged as a result of these rains, pilgrims are enthusiastically seen continuing with their journey to the temple. And here's a look at some more news in brief. The National Investigating Agencies conducted searches at 9 locations in Rajasthan's Udaipur district in connection with the killing of a Hindu tailor, Kanhaiya Lal, last month. Now, the NIA has seized all digital devices and other incriminating materials, which will further help in the probe. Further investigations in the case are underway. Shocking footage shows the Coast Guard's flag and the Indian flag dumped in Kochi's Irupanam. The police have registered a case in the matter while further investigation is underway. Apart from the tricolour, Coast Guard. And now, viewers, tracking for you all that is happening in Sri Lanka, and the latest that we are learning now is that the Sri Lankan Army Air Force, in fact, now is patrolling the streets and skies, and Lankan Army, in fact, has taken over the state television and radio as well. These are the latest details that we are picking up from Sri Lanka, and we had seen the kind of absolute chaos that has ensued in Sri Lanka over the past few months. And of course, that chaos hitting its crescendo over the past 2 to 3 days since the president has also fled the country. And thousands of the citizens of Sri Lanka are thronging the streets, and the anger in the citizens growing by the minute. And the protests also not stopping anytime soon. And that is why these kind of developments that we are tracking from Sri Lanka, where the Lankan army has taken over the state television and radio. And for more on this, let me bring in our senior executive editor Abhishek Kapoor on the broadcast. Abhishek, speak to us about the kind of developments that we are tracking out of Sri Lanka. Now the Lankan army has taken over the radio and the television and is also patrolling the streets and the air as well. Absolutely, Priyanka. So we have seen the defense forces of Sri Lanka becoming active in the last 24 hours. The state television and the radio were taken over, in the sense the premises were taken over in the forces late evening, and we saw how overnight Gotabaya Rajapaksa, the president, was shepherded out by the Air Force along with his family. And now we have seen choppers flying around Colombo, around the protest sites to send across, intervene at some stage. We have also seen pictures coming in from the ground where our crew is reporting of the protesters engaging with the soldiers, but obviously very friendly. That the army is still held in high esteem, but the fact is that we are seeing increased visibility of Sri Lankan armed forces apart from the police. So is it the defense forces essentially sending us a message that at some stage they might have to intervene, and that's why preparation is going on? What is important is that the situation remains volatile and the protests continue. And now it seems that Gotabaya Rajapaksa, instead of resigning and calming down the tempers, has chosen a move which could be provocative as far as protesters are concerned, because what he has done is, instead of leaving under Article 40
and letting Parliament decide who would appointed Ranil Wickremesinghe. Time that Gotabaya is out of the 37 of the Constitution. So I think this also might cause a bit of a heartburn among the protesters. Not very good signs, but that's how developments taking place in Sri Lanka. Everyone is closely watching. The IMF and the friendly nations, including India, they may maintain that once calm prevails, focus can come back on governance issues and to make sure that despite bankruptcy, a general humanitarian crisis does not pan out in Sri Lanka. We are seeing how there is absolute scarcity of food, fertilizer, fuel, everything, and that लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। ये हालात है श्रीलंका के, ये स्थिति है श्रीलंका की, और जनता अब अपनी तकदीर खुद तय करना चाहती है। जनता अब हिसाब मांगना चाहती है उन लोगों से जिन्होंने सालों साल राज तो किया, लेकिन श्रीलंका के लोगों का भला करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना भला किया है, अपना ध्यान रखा है और तमाम व्यवस्थाएं अपने लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी। राजपक्षे पर यह आरोप लगे कि जब सुनामी की त्रासदी आई तो उसमें जो पैसा मिला वो उनकी जेब में गया। राजपक्षे पर यह आरोप भी लगे कि जब कोविड काल आया तो उन्होंने वो पैसा भी अपने परिवार और अपनी जेब में भरा। राजपक्षे पर यह आरोप लगे कि चाइना से जितनी डील हुई उसमें भी जितना कर्ज लिया गया वो अपने परिवार के भले के लिए इस्तेमाल किया गया। और देखिए एम्बुलेंस दोबारा ले जाई जा रही है, लगातार लोग घायल हो रहे हैं क्योंकि वहां पर लोगों को हटाने के लिए तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आर्मी की तरफ से कई लोग घायल हुए, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लोग मुंह धुलकर अपना किसी तरह यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। सबके हाथ में जो आप वाटर बॉटल्स देख रहे हैं, दरअसल हजार क्रेट वाटर बॉटल लेकर तमाम जो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंचे हैं और लोगों के बीच यहाँ पर बांटी गई है वो वाटर बॉटल्स। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ लोगों से भी बात करें, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? And once again, that was my colleague Saloni getting us all the updates on the ground, getting us the images from the ground as well, viewers, as to what is really ensuing on the streets of Sri Lanka, where thousands of angry citizens are thronging the streets, coming out in protest against their politicians, namely the president who has fled the country and the prime minister as well, who will be now technically the sitting-in president in the interim till there is an election. And now we are seeing that the authorities are on the streets trying to make sure that they pacify these citizens as well. We had seen dramatic images of tear gas also being lobbed on these protesters to make sure that there is no more untoward incident that also breaks out, since thousands of protesters, angry protesters for that matter, were also on the streets, are still continuing to be there on the streets and protesting against the politicians, demanding accountability from the politicians as well. Also, there were several slogans against Rajapaksa as well, who has now fled the country, namely has gone to also Maldives, is what we were learning. And now we are learning that even more, as authorities are trying to take control of the situation, the military presence also that has been deployed on the ground. Let's go back once again to Saloni on the ground. People is going out of the Ranil. Don't like your Ranil, Prime Minister and President. All like to another people is the President and Prime Minister. Very bad fellows, Ranil and the Paka man, Gotabe. It's a very dangerous man. He's a political is Bachul and Who do you want as a president? Who do you want? Who's the Aragal? Some people is asking who's the sometimes Sajid, sometimes Antakumar Disana, I don't know. Everybody is like that people after some time this Prime Minister is the President. After that good country. No petrol, no gas, no like that. Already that's not a problem Sri Lanka. तो आपने सुना एक अच्छा देश ये कह रहे थे कि इट वाज अ गुड कंट्री, लेकिन अब नो फ्यूल, नो पेट्रोल, नो फूड, नो सप्लाईज, यानी जो समस्या है मूलभूत बुनियादी चीजों की हम बात करें तो 470 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं लोग यहाँ पर।
Also now viewers, that was Saloni getting us the ground report from Sri Lanka, talking to several of the citizens of Sri Lanka as well, who are expressing their anger on the politicians who have fled the country and the politicians who did not take any action to help the citizens of Sri Lanka, help their electorate as well. On that note also, let me bring in our senior executive editor Abhishek Kapoor on the broadcast. Abhishek, let's continue as we were talking about earlier about the procedure going forward. Because we have seen that the president in fact has fled the country. But as you are also breaking for us, Abhishek, instead of activating Article 40 under which the new president has to be appointed, there has been an Article 37 that has been activated to appoint a replacement till he is not able to discharge the responsibility. Take our viewers through the entire procedure of this and what really can be expected for Sri Lanka going ahead. Well, yes, Priyanka, that is exactly what has happened, and it seems going by the kind of groundswell of anger we are seeing on the streets of Colombo, around the capital area, around the area where the establishment is, essentially the parliament, president's office, the president's residence, and of course the prime minister's office and residence. It is clear that it is not going to be appreciated. टीयर गैस का एक बार फिर इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। देखिए, लोग मुंह पर पानी डालकर आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से हट रहे हैं वहां से। भारी इस्तेमाल टीयर गैस का किया गया है। सफेद धुआं ये आप जो देख रहे हैं, देखिए स्थिति खराब हो रही है लोगों की। लोगों को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये हाल है। देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और लोग भारी भीड़ यहाँ भागती हुई लौटते ही भारी भीड़ नजर आ रही है। देखिए हालात खराब होते जा रहे हैं कैसे। छोटे बच्चों को भी देखिए, छोटे बच्चों को के ऊपर भी टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। देखिए पूरी तरह से लोग यहाँ पर किसी तरह जाते नजर आ रहे हैं। आप हालात देख रहे हैं, यहाँ हालात खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है लगातार। बहुत बेतरतीबी से इस्तेमाल हो रहा है, हटाए जा रहे हैं लोगों को हटाया जा रहा है। तितर बितर कर रहे हैं लोगों को, लगातार लोगों को तितर बितर कर रहे हैं। हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चों की भीड़ यहाँ पर है, छोटे बच्चों की भीड़ है। इसके बावजूद लोग यहाँ पर टीयर गैस का आर्मी की तरफ से इस्तेमाल हो नजर आ रही है। लगातार लोग यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप तक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग घायल भी हैं और पानी यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को चेहरा धुलने के लिए। लगातार पानी भी दिया जा रहा है। हमें भी थोड़ी तकलीफ हो रही है इस चीज से। हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोशिश हमारी जारी है कि आप तक हम तस्वीरें पहुंचाएं। आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए अभी हालत लोगों की किस तरह से खराब हो रही है। ये सड़क खाली कराने की कोशिश हो रही है, लोग यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोग किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए और आंसू गैस के गोले। पूरी सड़क को खाली कराया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर कैसे पूरा खाली हो, इसकी कोशिश हो रही है। और अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन लोगों की काफी भीड़ है और लोग लगातार तितर बितर होने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तस्वीर पहुंचाएं, लेकिन देखिए लगातार आंसू गैस के गोले चेहरे को पानी से धुला जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे तस्वीरें। लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। आप देखें अगर तो दूर तक आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। लोगों की आंखें लाल हो गई हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे, चेहरा जल रहा है, लोग अपने चेहरे धुल रहे हैं। लगातार हमारी भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि आप तक तस्वीरें पहुंचाने की जिम्मेदारी हम कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिक कोशिश कर रहा है कि आप तक
जो हालात है श्रीलंका के, जो इकोनॉमी की हालत है, जो जनता की हालत है, जो सड़कों की हालत है और जो प्रदर्शन का दौर है, वो अब तक बखूबी पहुंचा पाए। देखिए लोगों ने अपने मुंह को ढकने की कोशिश की है, जिससे कि अभी भी, अबे दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, अभी भी गैस, आंसू गैस का इस्तेमाल पूरी तरह से भीड़ को वहां से तितर बितर करने के लिए। वैसी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, कुछ प्रदर्शनकारी यहाँ पर लगातार चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार चिल्लाते हुए बढ़ रहे हैं। रानिल सिंघे, विक्रमसिंघे के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन रुकेगा नहीं। धुएं का जो गुब्बार आप देख रहे हैं, दरअसल वो यहाँ के लोगों का रोष है जो कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। हम लगातार हर तस्वीर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी भीड़ है यहाँ पर और आंसू गैस का लगातार इस्तेमाल थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है, दिखने में दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ शोरगुल लगातार जारी है। लोग हैं वो डटे हुए फिर से वापस जा रहे हैं लोग। ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, फिर से लोग वापस जा रहे हैं। और देखिए प्रेस के लोग जो हैं, कई लोगों ने ऐसे मास्क लगाए हुए हैं जिससे कि उनको बेहतर तरीके से आपको हम तस्वीरें दिखाएं। लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, आम लोगों ने भी। और अभी यहाँ पानी की बोतल्स दी जा रही है जिससे कि लोग मुंह धुल सके अपना लोग, इसलिए पानी की बोतल्स दी जा रही हैं। जो हालात है वो बद से बदतर श्रीलंका में हो गए हैं। आपातकाल तो लागू कर दिया है, लेकिन जनता सवाल पूछने से रुक नहीं रही है और साफ तय किया हुआ है जनता ने। और ये देखिए व्यक्ति चोटिल हो गया, खून रिस रहा है, लगातार खून रिस रहा है, इसे ले जाया जा रहा है अस्पताल, मेडिकल एड के लिए ले जाया जा रहा है। कई लोग चोटिल हुए हैं, कई लोग घायल हुए। इस तरह से जो प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई है। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अपना चेहरा धुलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ हालात बद से बदतर है। श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है, जो कंडीशन पूरे देश के बिखरता ये देश नजर आ रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब इसे समेटेगा कौन, जनता में विश्वास लाएगा कौन, क्योंकि विक्रमसिंघे पर विश्वास नहीं है, राजपक्षे गोटाबाया पर विश्वास नहीं है। और देखिए लोग लगातार कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का नारा दे रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, प्रदर्शन का हिस्सा बने रहना है और लोग वापसी भी कर रहे हैं। देखिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उन्हें इस संघर्ष में बने रहने के लिए अपील की जा रही है। हर तस्वीर रिपब्लिक आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार कोलंबो श्रीलंका से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए एक बार फिर भीड़ वापस जाती हुई क्योंकि संघर्ष यहाँ पर श्रीलंका के लोगों ने, धधकती लंका ने, अब गुस्से से जो धधक रही है लंका, वो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का फैसला ले चुकी है और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। चाहे आपातकाल लागू हो जाए, चाहे कर्फ्यू लगा दिया जाए, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, ये समझ में आ रहा है। देखिए लगातार और एम्बुलेंस लाई गई है। कई लोग क्योंकि घायल हुए हैं, उन्हें ले जाने के लिए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए देखिए एम्बुलेंस लाई गई है। एम्बुलेंस के जरिए लोगों को ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ आपाधापी की स्थिति लगातार बनी हुई है, हालात खराब हो रहे हैं। थोड़ा हमारे लिए भी बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसका असर हमारे ऊपर भी हो रहा है। हर तस्वीर रिपब्लिक नेटवर्क आप तक पहुंचा रहा है। विजय अभय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोलंबो, श्रीलंका। And once again, we're getting you all the ground updates from Sri Lanka, and we are tracking for you those images, viewers, that are unraveling there in Sri Lanka, where massive protests are still underway as there is a sense of chaos in the entire political fraternity of Sri Lanka, as well as the president has fled the country. And going forward, what will be the decision taken to get the country out of this economic crisis is also something being mulled upon, and we'll be getting you all the updates on the other side right after this short break. Punjab's Advocate General A.G. Sidhu was attacked by unidentified people while he was travelling via train. Some unidentified people pelted stones at him near Panipat. The AG filed a complaint to the police for further investigations. Punjab Advocate General appeared in the Supreme Court in the Lawrence Bishnoi case yesterday.
In another jolt to the Uddhav Thackeray camp, the Yuva Sena leader Vikas Gogawale has joined Eknath Shinde's camp. Vikas was seen at the Chief Minister's residence last night, formally extending support on the occasion of Guru Purnima. He also claimed that more than 50 office bearers of the Yuva Sena will join the Shinde camp this week. A group of nearly 8 terrorists tried to sneak in via the Poonch line of control in Jammu and Kashmir. An infiltration attempt was witnessed during the midnight along the line of control. Indian Army has neutralized 3 terrorists on the spot in heavy firing now. This comes just days ahead of the Amarnath Yatra. The AIADMK's interim General Secretary EPS and ousted party leader OPS moved the Madras High Court against the sealing of the party headquarters by the Tamil Nadu government on the 11th of July. The High Court is likely to hear the matter today. In a heart-wrenching incident in Pune's Welcome back, viewers. Straight away cutting across to those images that we are tracking for you from Sri Lanka, where massive protests are still going on by the angry citizens on the streets, and we are seeing the authorities also trying to pacify those citizens. Tear gas shells had been lobbed as well, and we had seen several parts of the protesters also being dispersed, and there were medical aids also being given to these protesters as well. And in the latest, we are learning that the military presence is also being increased on the ground. Air Force is also monitoring the situation, is what we are learning. The images of those are also on your screens, and we are continuing to have this conversation with our senior executive editor, Abhishek Kapoor also. Abhishek, we had been talking about this absolute chaos that is now ensuing in Sri Lanka, where there is a lot of confusion over who really is the decision maker going forward, because the president has fled the country. In fact, we were also tracking the leader of opposition claiming that there is no power to the sitting prime minister to declare emergency as well. So what really can be expected going forward? Well, that's what we have been discussing, Priyanka, that even the protesters, and it's an organic protest, so we don't know who's leading. It's a ragtag coalition of all sorts of people who have come together, essentially angst-ridden Sri Lankans, and their concerns are genuine. But then if they do not let things come to order, if they do not let law and order prevail, it's going to be very difficult for the government to negotiate with the international financial institutions like the IMF, or to talk to friendly governments to bail out the struggling economy. And I think in that sense, these protests perhaps beyond a certain point are going to prove counterproductive, and that's what we are seeing happening, panning out in Colombo. Having said that, even Gotabaya Rajapaksa, with his latest move to not resign and appoint Ranil Wickremesinghe in his place as an acting prime minister, also complicates the situation and does not give the protesters an opportunity to really call it, taper off the protests and move back to their homes. Which means that both sides are not willing to blink. It seems that there is very intense politicking happening still on the ground, irrespective of whether this is coming in from the opposition ranks or this is coming in from the Rajapaksa clan. Remember, the Rajapaksas have been very strong in Sri Lanka over the last 2 decades, with a mix of authoritarianism, nepotism, cronism. They have really ruled the roost. At one point in time, the family controlling almost 70% plus of the budget of Sri Lanka, hobnobbing with the Chinese, bringing in those projects which have proved to be a disaster in terms of the fiscal stability of the government, and ultimately leading to this economic crisis. Some bad policy measures, for example, in 2020, the government of Rajapaksa decided that Sri Lanka would completely go organic and stopped all fertilizers. That really had a detrimental effect on food production in the country, which has contributed to spiraling inflation, which stands at about 80%. I was going through the reports, and if you look at the global situation where high inflation is ranging between 8 to 12%, in India at about 7%, 80% inflation is a killer, and that's what has brought the protesters out onto the streets. But Rajapaksa there also not letting things calm down with his very provocative act of not resigning. So we don't know who's really controlling, who's in charge, who's guiding.
whether there is sage advice available to all these top leaders to really pull back and let calm prevail so that the island nation can be brought back to stability somehow. The fact that India has pumped in almost $4 billion worth of aid, either in cash or kind or line of credit or materials provided, fuel supplies given, and yet it has not really helped, shows the scale of disaster we are looking at. And despite that, if provocative actions continue, now Lankan TV has suspended broadcasts after the army takeover late evening, Priyanka, and that really shows that the situation is dire and the consequences could be even severe if from here on both the sides, the protesters and the government and these leaders, Ranil now, Rajapaksa then, they don't really work in the best interests of the country rather than making ego issues. Gotabaya Rajapaksa should have resigned. He should not have waited for 2 months for really protests to boil over, despite the fact that the protests have been going on for the last 2 months after Mahinda Rajapaksa also vanished under similar circumstances, and yet his whereabouts are not known. They are being kept secret. But the Gotabaya clan has chosen to leave the country. In fact, it was believed that he was wanting a US visa, which was denied to him yesterday, and on the grounds that it would seem to be interfering in the internal affairs of the country or to be taking one side with the American government really does not want. So it seems he might, from Maldives, given the fact that there are, protest voices coming out of Maldives as well, it's likely that Gotabaya finally might have to leave Maldives also, either to Dubai, the United Arab Emirates, or possibly Singapore, depending on which government is more favorable and favorably inclined. Having said that, protests continue on the streets, pictures coming in, our crew is there, army and the defense forces really sort of not fully out in the streets, but taking over vital installations like the broadcasters, both the television and the radio, and choppers flying in, low flying, indicating that this is more like a flag march, fly past kind of thing. And similarly, we have seen soldiers going between the protesters. So I think the army is also just testing the waters. So we have had